Can you hear me, Urvi and Umer? Am I audible? Yes, sir. Okay. उमेर आपको सुनाई दे रहा है? So in the last class, that is yesterday, we did which threads? हम लोगों ने we have done the self interest वाला, right? उसमें कुछ doubt है? सर आप टैक्स का मेरा डाउट सॉल्विंग कभी कराओगे? In fact, it was कितना supposed to टाइम हो start. गया? It was supposed to start the second week. Means ये मंडे से शुरू हो जाएगा. मैंने अखिलेश से बात किया है. सबका, आप ही का नहीं, सबका शुरू होना है. तो मैं करवा देता हूँ. ठीक है? पहले से कब से आपने मंडे बोला था? वो चालू ही नहीं हुआ, एक ही लेक्चर हुआ, फिर ऑफिस बंद हो गया। मेरा डाउट सॉल्व कैसे होगा ऐसे कितने करोगे हुए? तो? कितने डाउट्स हैं आपके इसमें? सर एक्चुअली तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे मीन्स हाउ मेनी सेशंस? सो दैट अकॉर्डिंगली मैं बात करूं, क्योंकि उनका कुछ डाउट्स नहीं था. उन्होंने बोला कि दे डोंट वांटेड इट, जो स्नेहा और ये लोग जो है. इसलिए आपका डाउट्स मुझे बता दोगे ना, तो मैं वो डाउट्स करवा देता हूँ. वो मैं बोल रहा हूँ. मैंने तो सर को कब का फॉरवर्ड भी कर दिया मेरा डाउट। वो मुझे भेजो एक बार. आपने मुझे भेजा नहीं. मैंने आपको भी भेजा है। मैंने आपको कभी नवंबर में भेजा, नवंबर के स्टार्टिंग में ही तो भेजा। नवंबर से आई एम लाइक प्रेशरिंग एक इट सेकेंड. कि प्लीज डाउट सॉल्व करो। डाउट सॉल्व मीन्स आपने पूरा बुक ही भेज दिया? नहीं, बुक नहीं. आपने कितने? बुक नहीं भेजा है। मेरे को जो डाउट्स है उसमें वही मैंने भेजे। एंड दे आर लाइक लिटिल लिटिल काइंड ऑफ डाउट। लिटिल लिटिल. तो देन विल सॉल्व इट. दैट्स फाइन. मैं देखता हूँ वो डाउट्स देखे. इनफैक्ट मैं सर से बोलता हूँ, वही क्लोज कर देता हूँ. नो इश्यूज. देन इट्स नॉट अ बिग थिंग. अगर वही आपके डाउट्स क्लियर करने हैं तो मैं करवा देता हूँ. ठीक है, कल चेक. चलेगा. सो वी हैव डन द सेल्फ इंटरेस्ट वाले थ्रेड्स. उसमें कुछ डाउट्स नहीं. सो वी आर स्टार्टिंग विद द फेमिलियरिटी थ्रेड. अब like we said, we have a thread, and how are we going to safeguard that thread? Safeguard is nothing but those actions which are going to help you in taking care of your thread. Okay, so familiarity thread means यहाँ पे देखो, when the auditor becomes too sympathetic or too trusting of a client and loses professional skepticism, or where relationship between auditor and the client goes beyond professional boundaries, तो उसको हम बोलते हैं familiarity threat. That means you are not able to draw the line between professional ethics and your personal ethics. So there the familiarity threat comes into place. So if that threat comes into place, how are you going to safeguard the threat? Okay. पहला देखो, long association of senior personnel. That means you have been doing with them auditing काफी time से. So that means you know what are the clients के गलतियां, you know where the mistakes are, you know how to cover it. Okay, why? Because you have been serving as a member of the team in the audit team for a longer time. Let's say for an example, Omer has been doing audit for the Urvi's companies 2-3 साल से, और ये साल में भी Omer is member of the audit team. And what happens, जैसे ही Omer आएगा उसको हाय बाय बोलेंगे. एवरीवन नोज दिस द गाय. उसको किससे मिलना है, क्या करना है, कौन क्या करता है, he knows everything. So that means what? So the possibility that being a known personality, he knows all the pitfalls. So he knows what to cover and what not to cover. Okay, so that means he is trying to use that acquaintance in the audit part of it. So in that case what happens, जब भी कोई person रहता है, अगर नॉन लिस्टेड क्लाइंट है, रोटेट कर. मीन्स अगर दैट मीन्स रोटेशन मीन्स अगर मैंने इस बार आपको भेजा है उमेर को ये पर्टिकुलर कंपनी में, तो
अगली बार मैं ओमेर को यहाँ पे नहीं भेजूंगा, कहीं और भेजूंगा। यू नो पॉइंट? गणेश, ओमेर। Yes, sir. So that means you are changing the audit staff on a regular basis to the client. So the client cannot take advantage of the acquaintance. So that's where you are going to maintain the professional ethics or the professional code of conduct. So the independent partner or the quality control reviews. ये हो गया नॉन लिस्टेड क्लाइंट। अगर लिस्टेड क्लाइंट रहेगा तो क्या होगा कि ऑडिट पार्टनर मस्ट बी रोटेटेड आफ्टर नो मोर देन 7 years with a minimum break of 2 years, means 7 साल और 2 years means continuously 2 साल से ज्यादा वो कंटिन्यू नहीं करेगा, उसका रोटेशन में you give them a break and again they continue. Okay, if the client becomes listed, अगर वो listed में चला जाता है, the length of time the partner has served before being listed is taken into account. और exception circumstances क्या है? A maximum of 1 year extension is permitted where necessary to maintain audit quality. अगर audit quality maintain करनी है, because what happens is when a person is already working in an audit for a particular company, to maintain the consistency in the method of audit, they may maintain the same staff so that the consistency is being maintained. But again, you have to keep in mind that regularly you have to change the staff. That's the reason staff को rotation में डालते हैं. Okay, so large companies, what happens, they tender every 10 years. Contract एक को मिलता है, but जो audit का जो staff जो रहता है, एक दो छोड़ के बाकी लोग को change कर देते हैं, so that they can maintain the audit quality. Okay, and however, this responsibility of the company, not the audit firm. Company का responsibility रहेगा, not the audit firm का responsibility. And next, family and personal relationship. ये भी family threat के अंदर आता है. That is, here what is happening is when a member of the team या फिर उसका family member can like is also a significant influence in the client का company में. Okay, let's say my niece is one of the director of the company. Okay, in that case I have a significant role to play. So in that case, how we can do that? Either remove that individual from the engagement team, that is audit team में से वो जो बंदा जो है जिसका रिश्तेदार वो कंपनी में काम करता है, उसको वो audit team में से निकाल दो, simple. So that's how you are going to maintain or removing the threat. Structure the engagement so that the individual does not deal with the matter that are responsible for the close family member. अभी रिक्रूटमेंट सर्विस, अब रिक्रूटमेंट सर्विस क्या है मुझे बताओ. So what you understood, Urvi? बोलो, how is the threat and how can we safeguard? मतलब वो अपने सीनियर पर्सन के क्लाइंट्स को रिक्रूट कर रहे हैं तो वो थ्रेड बच जाता है फेमिलियरिटी और सेल्फ इंटरेस्ट का. एंड सेफ गार्डिंग में ऐसा लिखा हुआ है कि दे शुड नॉट प्रोवाइड दी सर्विसेज लाइक डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट्स के. Okay. So in short, ये जो recruitment service जो heading है, it can fall under familiarity, it can fall under self-interest, it can fall under intimidation also. It depends on वो किस तरफ से initiate हो रहा है. Okay. So whenever the recruitment service is there, the audit firm should not involve in doing both. Audit भी करे और recruitment भी करे. तो क्या हो जाता है अगर वो करता है ना, तो पॉसिबिलिटी क्या होती है कि जो भी ऑडिट टीम रहती है, they try to consider कि in case they do a proper favorable audit, the management of the client is going to take that into consideration और उनको position या job मिलेगा. Okay, so hence the एक तरह से वो self interest में भी हो जाता है क्योंकि वो जानबूझ के कर रहे हैं, या फिर it can be an intimidation from the management point of view कि तुम लोग करोगे तो मैं absorb कर लूंगा मेरी कंपनी पोस्ट में. So that's where whenever the company, the audit firm involves both the things,
So the best way in dealing these kind of recruitment services where audit firm is doing audit as well as recruitment service for the company, the client, then it's always the firm should ensure that recruitment service जो allied services जो रहते हैं not to provide. Otherwise, it is going to influence the which might influence the client's financial statements. Opinion के लिए. Next, employment with an audit client. ये सेल्फ इंटरेस्ट फैमिली इंटरव्यू सेम टू सेम रिक्रूटमेंट सर्विस लाइक रिक्रूटमेंट सर्विस ऑडिट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑडिट क्लाइंट इज द टीम मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट टीम मेंबर जो रहता है ओके so employment with an audit client is self interest familiarity integration part where an employee of the firm becomes a director of or employee of an assurance client so in that case is significant है why because they know the firm they know how they work okay that means अगर उर्वी जो कल तक was working with some X firm okay so if Urvi is working for some X firm okay some X firm she was working now she is that was an X firm is an audit firm now she is working for some Y company as a director okay now she knows everyone in the X firm so as a Y company as a director she is recommending some X firm for the audit X firm for the audit then why because she has a previous employment at Y firm okay she has some previous experience at employment at the Y firm so hence the possibility that she might influence the decision of the opinion of the audit client so hence she will assign certain individual of the audit team that is going to have sufficient experience and she has better relationship so that she can join the client part so in that case what happens she is influencing the quality control of the audit so अगर listed client रहेगा सर एक बार एग्जांपल वापस एक्सप्लेन करोगे अगर आप एक्स कंपनी में एक्स फर्म में ऑडिट आप एम्प्लॉयड हो okay when you are working in some X audit firm now you are no longer working with the X audit firm now you are working for a by company as a management executive या फिर as a director partner so now you know the extra audit because you have been doing audit kind of right so when you are recommending them when the team of X audit firm is going to come work for you okay you are assigning the individuals to the audit team who are having sufficient experience whom you know okay so then the quality control is influenced okay so because the independence of the audit firm has been lost because of your acquaintance okay so the key member or the senior partner of the client has issued audited financial statements covering यहाँ पे दिया listed clients के लिए so what happens in this case whenever the employment with an audit client रहता है and you're already an employee of that particular company it can be vice versa also it can be vice versa why because your acquaintance is too much influencing your audit report it can be you're an employee of the audit firm and now you're an employee of another company as a director and audit firm वाले अगर आपके कंपनी में audit के लिए आते हैं so that means you have a say or an influence in the opinion part of it the same way मीन्स मैं सेम कंपनी के डायरेक्टर एंड वही कंपनी की ऑडिट फर्म में हूँ हाँ ओके okay so in that case what happens because of your acquaintance you are trying to compromise on many qualities issues because you know the financial statements उनके कैसे चलते हैं you know their loopholes you know where their problems are or probably you are going to understand them saying that yaar you have been working with us for so long so let's now it's payback time now it's payback time the client might issue the audit statements covering a period of not less than 12 months and the partner was not a member of the audit team with respect to audit of these financial statements so in that case how can we safeguard you whenever you have a person whose self-interest familiarity is there or intimidation is there and which can be used by the client because of the position so it's always better to ensure that that person is not a member of the team okay and self-review threats self-review threats means what मुझे बताओ गणेश
self review threats. Hmm? Ganesh, what is self review threats? So what is self review threats, Ganesh? तो अपन ने कल किया था. See, self review का मतलब है अपन the people who are trying to do that. Let's say for an example, it is either internal, okay, or it is you're reviewing your own work. Let's say for an example, um, Urvi's firm is managing my um, financial books, the accounting and financial books part of it. And मैंने वही फर्म को being a third party मैंने उनको ऑडिट के लिए दे दिया, right? So what is happening? What is happening? Means जो अकाउंट बना रहा है वही उसको रिव्यू कर रहा है, सेल्फ रिव्यू. ओके, सो दैट मीन्स व्हाट, जो बनाने वाला है उसको रिव्यू करेगा तो वो अपनी गलतियां निकाले क्या? Is he going to make the this thing mistakes? समझ में आया उर्वी? So सर एक when बार रिपीट करो ना, एक्चुअली मैं मीटिंग से ही बाहर निकल गई थी. अच्छा, so मैंने ये बताया कि self review threat means where you're offering some non audit services to a particular audit firm and the same firm is actually likely to conduct as an audit. So in that case the possibility of they admitting errors is very less, so because of self review threat. Let's say for an example, you are you are a third party independent auditor, okay, and you have been managing my books of accounts. And if I say that Urvi, now you are an independent auditor and you have been managing my books of accounts, you also do my audit. So are you the what is the possibility of you not finding out errors? मीन्स आई डिडंट अंडरस्टूड. I said you are managing my company's books of accounts. ओके. I have given my company has given contract to your company for managing our financial books of accounts. So you are managing my books, like मेरे GST आप fill कर रहे हो, मेरे entries सब आप manage कर रहे हो, and everything my financials are managed by your company, okay. And in my annual general meeting audit भी मैंने आप ही लोगों को दे दिया because you have been managing, okay. So what is the possibility that you are going to identify that mistakes or errors? बोलो. आइडेंटिफाई करूंगी तो भी मैं क्यों बताऊंगी, मैं मेरा ही गलती क्यों बताऊं? Right, so that is self review threat. The possibility of me not able to identify the error or admitting the error is very less. Either I may not identify the error or I may not accept the mistakes, okay. So how can I safeguard that kind of a threat? Agar non listed client hai, okay, the firm can provide a non listed audit client with auditing services routine jo rehta hai, but you have to create separate teams. Okay, if you are the client, so how you can safeguard interest of the client is the people who are managing the accounts and the people who are doing the audit make separate teams. भाई कंपनी को सेम कंपनी को दिया है, but I want separate persons, only then I can manage the quality part. Listed clients हैं तो दोनों को एक को दो ही मत, और listed clients हैं तो don't give two works to the same person. Got a point? Otherwise we will not be able to address this self review threats. Got it? So वही यहाँ पे दिया है.
Listed clients, a firm cannot provide a listed audit client with accounting and auditing services. A firm can provide accounting service for divisions or related entities of a listed clients if separate teams are used and services related matters immaterial to the division related entity. तभी वो offer कर सकता है, ensuring so that you can safeguard that quality interest. Internal audit services. So in addition to self-review thread, the auditor need to be careful not to assume management responsibilities. Okay, जब भी इंटरनल ऑडिट रहेगा तो उसको ऑडिट ही करना है. He should not take into management responsibilities. How can you say? So in that case, what safeguard measures? A firm cannot provide internal audit service for a listed audit client. First thing, that's how we can safeguard the interest. That means this company का मैं external auditor हूँ, you are not supposed to do internal audit part of it or any other services related to internal audit control. Why? Because that is going to create material statements in the financial statement. Okay. And again, you have to ensure that separate teams are there. Same way, taxation services, ये सब जो है tax services, tax advice, IT services, these are all the services which are provided by the audit firm, which are non-audit services. Okay, ये जो है ना, okay, these are all non-audit works like accounting, bookkeeping, internal audit services, taxation services, tax advice, IT services, valuation services, temporary staff assignments, corporate finance services. All these things which are there, these are all the allied services which are offered by the audit firm to the clients. And only thing that you have to ensure is whenever a particular client is being assigned to an audit firm as a part of the engagement team, the audit team and the service team, जो नॉन अलाइड सर्विसेज जो है वो दोनों अलग अलग होने चाहिए. Only then you can ensure or safeguard the threat. Understood, Umair? Yes, sir. So only then you are able to manage. It doesn't matter which services, because self review में क्या हो जाता है कि एक ही टीम को और एक ही कंपनी को दोनों सर्विसेज आप दे रहे हो, तो you can give it unless and until they are separate teams. If they're separate teams, separate people coming in, they do not have any connection part of it, yes, you can maintain the quality because the people are different. But the same people are there, same team, then you need to change them. Advocacy threats. So what is advocacy threats? Before we get उसमें क्या advocacy threats means what? बोलो. Advocacy means in support of. Advocacy का मतलब ये है कि you're as an auditor, you're standing on the side of the client. Advocacy means in favor of the client part, taking the Okay. sides. Okay. So example, what are the examples? यहाँ पे दो examples here. One, you like you are representing the client in the court wherever there is some dispute in the matter of financial statements, or you are trying to negotiate on behalf of the client. Okay, so wherever there is some materiality in the amount or in the transaction part of it, okay, they are any request in those kind of services as a part of the audit firm to maintain the professional ethics, you are supposed to decline that kind of services. Okay, where the matter is not material, agar material nahi hai, so then you should be very professional, okay, and who are not member of the team to perform the service. Agar wo material nahi hai, so you have to offer professional services and ensure that you are maintaining that ethical governance and the audit team to perform in an unbiased manner. And again, have a professional who was not involved in providing any previous legal services or advise the audit team on service and review their financial statements. So in short, we are not there to promote the company, the client. Okay, we are there only to ensure that to see the authenticity of the statements, to see the materiality of the statements, and ensure that the financial statements have been
have been prepared in a fair and true manner. The financial statements are there or not. And again, the client share would create an advocacy or self-review threat or significant that no safeguard could reduce the threat to an acceptable level. So इसलिए advocacy जो रहता है, so whenever you are trying to create advocacy or you are promoting the client, so the firm should always try to avoid the services, allied services to the audit client. Because the moment you start providing audit services, other allied audit services to the client, the possibility of you getting into involved in advocacy threat will arise. Because of you providing other services, you might be asked to prove in the court that the client is in a fair manner. Let's say all these financial scams जो रहते हैं, उसमें क्या हो जाता है कि the companies like KPMG हो गया, EY हो गया या फिर Deloitte हो गया, so when they are managing the big companies accounts and audits and all those things, like what happens is they are also involved in case any financial fraud happens, they get involved in that transaction part of it. Why? Because of they offering multiple services to the client, even though the team is different. So we have to be very careful when the company is providing more than one services to the client. जैसे यहाँ पे अपन ने देखा familiarity में, self review में, valuation services, IT services, tax advice, taxation services, all these things when you are involved with the client. So what happens is you get involved in their issues as well. So you have to ensure that you are not getting into those kind of issues. It can be self-review or advocacy. You have to be very careful. Okay. Intimidation threats. Intimidation threat means what? बताओ गणेश, intimidation threat क्या है? मैंने एग्जांपल भी दिया था कल. इंटिमिडेशन थ्रेट वो सेल्फ इंटरेस्ट में भी आता है और इंटिमिडेशन भी आता है. आई गिव यू दैट फी डिपेंडेंसी वाला. So tell me, Ganesh, what is intimidation threat? ओ मेरा बताओ इंटिमिडेशन क्या है? Pressure, yeah, influence by our client. Right, very good. So that means client is using the situation to his advantage and influencing the audit firm or the member of the audit team to uh, ask him to give him a favorable or opinion part of it. Okay, few examples like a personal relationship, fee dependency, like जैसे मैंने बताया pending fees, तो मैं बोल सकता हूँ कि तुम ये ऑडिट क्लियर कर दो, आपका पुराना और ये दोनों मिला के मैं क्लियर कर देता हूँ. So then you are forced to give a favorable, what we say, opinion kind of like. Okay, and the same way you have personal relationship, in the audit partner joining the client again, or litigation between the audit firm and the client. So these are few issues which the client can use it and he can Sir, intimidate. litigation between the audit firm and client का example दो ना. अभी litigation का मतलब ये है कि समझ लो you have a suit. Litigation is nothing but you have filed a case against us. You have filed case against us or the company. Okay, and now the case is already running in the consumer forum or some kind of civil suit. Okay, so I will say that अगर ये favorable रहेगा so I might withdraw my suit. So I'm using my case so that in such a way that you are going to take advantage of the legal scenario. Okay, so litigation का मतलब like we have consumer forums and all. Like I'm not happy with the service. मैंने मेरा बड़ा कंपनी है, मैंने आपके खिलाफ एक केस डाल दिया, राइट? मैं बोल दूंगा कि ये ऑडिट फर्म कर दो, मैं वो प्लेस में आई विल हेल्प यू इन क्लोजिंग द केस. So थोड़ा slow जाओ ना.
लिटिगेशन बिटवीन ऑडिट फर्म एंड क्लाइंट का मतलब ये है कि समझ लो फॉर एग्जांपल ओमेर ने आपके फर्म के अगेंस्ट केस डाल दिया, ठीक है, ओमेर ने आपके फर्म के अगेंस्ट केस डाल दिया। अभी यहाँ पे क्या है, जब केस डाल दिया तो अभी आपका फर्म है, so Omer now he's going to use this litigation as a tool to intimidate कि अभी ऑडिट फर्म आप अभी भी आप ही हो, तो ओमेर बोलेगा कि उर्वी देखो अभी केस चल रहा है, so let this audit go smoothly एंड उसके बाद हम लोग केस क्लोज कर देते हैं म्यूचुअली। ओके, so what happens, Omer is taking advantage of the litigation or not? Yes. तो उसी को बोलते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट। Okay, so if the threat cannot be eliminated or reduced, the best way is decline the engagement. अगर threat को eliminate नहीं कर सकते हैं या reduce नहीं कर सकते to an acceptable level, then it is always better to decline the engagement. Okay. Confidentiality. What is confidentiality? Ganesh, confidential अपन ने किया था because see at the end as an auditor we are representing the shareholder because they are the owners of the company. उन्होंने अपने को इसलिए हायर किया because we are an independent auditors and हम उनके कंपनी के अकाउंट्स वेरीफाई करके we are giving them our opinion कि ये कंपनी में जो है आपने जिसका ऑडिटिंग का जिम्मेदारी हमको दिया है they have been maintaining in a proper manner and it is reflecting true and fair position of the company. Okay, अब ये जो confidentiality if you are putting at a stake, okay, and because of your employment with that particular organization or business relationship or them to acquire prospective clients part of it, so that should not be maintained. Always we have to remember external auditors they are very in unique position. क्या होता है कि समझ लो ओमेर इज एन ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर एंड गणेश एक कंपनी है एंड उर्वी एक कंपनी है एंड दे आर राइवल्स। ओके, दे आर राइवल्स एंड अब ओमेर उर्वी की कंपनी को भी ऑडिट करता है एंड गणेश की कंपनी को भी ऑडिट करता है। Okay, but the main thing that you have to understand is the client is trusting the auditor and he's disclosing all the information and he's keeping his books of accounts open for them for audit. So that means Omer has the complete understanding about Urvi's business as well as Ganesh business who are rivals, right? Now, because of his self-interest, okay, if he is trying to trade with that, that is definitely a trust of confidentiality. What a point. So because as per the law, disclosure of those information is not permitted, right? Okay, and the same way unless until there is a case going on and the law is asking the auditor to disclose those information, then you can only disclose in a legal manner but not at a personal level. So अगर ऐसा थ्रेट्स रहता है तो ओमेर की कंपनी should send two different teams separately to Ganesh ka company and Urvi ka company so that the both the teams will not know कि क्या उनके फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं। यू गॉट अ पॉइंट? पूरी समझ में आया? हाँ सर। गणेश, ओमेर? हाँ सर। So that means the auditor or audit firm is not disclosing the information of the client unless it is because of the legal course. वही यहाँ पर दिया है disclosure of confidential information कब? When it is permissible by law और like जैसे production documents evidence के लिए and all those things like public affairs अगर रहेगा तो, और if there is a professional duty or right to disclose when it is not prohibited by ACCA, अगर इनमें इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है एंड ऑल एंड यू आर कंप्लाइंग विद दोस स्टैंडर्ड्स। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया देखो, डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एग्जांपल्स। सो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर परमिटेड बाय लॉ, जैसे फ्रॉड हो गया,
ओके, टैक्सेशन में टैक्स वाला अथॉरिटीज डिस्क्लोज करने के लिए बोलते हैं. मनी लॉन्ड्रिंग, इनसाइडर डीलिंग अगर रहता है तो, जैसे यू नो दिस हर्षद मेहता का केस स्टॉक एक्सचेंज का, so again in those case you are supposed to disclose the company's internal matters. And then health and safety laws रहेगा, employment laws. So in short, any law which is when enforced, and as per the law you are supposed to disclose certain information, and when you're disclosing that, that is permitted. When it is public interest part of it, okay, because public interest there is no official definition. यहाँ पे दिया भाई दिया है कि public interest, what is public interest, who is going to decide कि ये public interest में है या नहीं है, how much information is to be given in public interest. So it is a matter of individual judgment. Remember that it is a matter of individual judgment and legal advice. Okay, so uh, so that's the reason it's very important how we are going to, because in the name of public interest I cannot damage the reputation of a company. Okay, so hence it is very skeptical about how much the information to be disclosed in the name of public interest. So while disclosing matters in the name of public interest, you have to keep certain points in mind, like what is the gravity of the matter, how much if it is important, what is the possibility of its repetition part of it, client ka willingness kya hai, because sometimes you might think it is public interest, but it might be related to client secrets or confidentiality issues part of it. Client might not want to disclose those information. So it is very important that you check with your client, like, is it, can it be disclosed? Okay, what is the gravity of the matter? How important is it? And probably you might even, as an audit firm, you might take a legal opinion of your lawyer or a legal firm, whether this falls under the this topic, not pura information deke. You can fall whether this falls under the legal ambit or not, as per the law. So the auditor will be protected from the risk of liability provided that he is disclosing actually in public interest. Got it? Next, conflicts of interest. Conflict of interest means what? जब अपन डिस्कस किया, conflict of interest रहेगा तो, so that means when the same audit firm is appointed for two companies, जो अभी अपन ने डिस्कस किया, conflict of interest, जैसे ओमेर की कंपनी गणेश की कंपनी को भी ऑडिट कर रही है और उर्वी की कंपनी को भी ऑडिट कर रही है. So the conflict of interest रहेगा when the company is competing with the same market or in the same trade. So in that case what happens, the best way to handle the threat is दो separate teams को भेजो. That is, the team which is doing the audit for Ganesh company will not do the audit for Urvi's company. So Urvi company को you are going to send separate team. So that's where it comes in. वही यहाँ पे discuss किया है. A conflict of interest may create a threat to the fundamental principles of objectivity and confidentiality. It may be perceived that the auditor cannot provide objective services and advice to a company where it also audits a competitor. Professional accountants should always act in the best interest of the client. However, where conflict of interest exists, the firm's work should be arranged to avoid the interest of one being adversely affected by those of another to prevent a breach of confidentiality. So that means you have to take every steps that is going to avoid the conflict of interest. Okay, not create conflict of interest. So hence you have to notify the clients of the conflict, and you are taking adequate measures to safeguard that. So what are the things that you can safeguard to avoid conflict of interest? एक तो separate management team. One is management team being separate, that is different members, different partners. दूसरा, procedures to prevent access to information, like physically you are making them separate कि team members में अगर even in the same team you are changing the members, assigning the duties part of it. Next, signing the confidential agreement between the engagement team members, like as members we are not disclosing the information of one client with another. Next, regular review of the application of safeguards. Regularly you are checking with your team whether they are following or adhering to those measures or not. Then advise a client seeking independent advice. Advise the clients to seek independent advice. You are advising them, the client, to check independently the opinion of others as well. Okay.
अगर एडिक्वेट सेफगार्ड्स आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, बेटर टू डिक्लाइन द एंगेजमेंट और रिजाइन द एंगेजमेंट फ्रॉम द ऑडिट पार्टनर। अभी यहाँ पे देखते हैं, टेस्ट और अंडरस्टैंड मुरे केस। अब यहाँ पे अगर अपन देखते हैं मुरे केस में, so you are an audit manager in Wimble company. You are an audit manager in a audit company. Okay, firm that is Wimble and Company, a large audit firm which specializes in providing audit and accountancy services. Audit be or accountancy services. Remember both the services part to manufacturing company. Murray company has asked your firm to accept appointment as external auditor. Murray company ने Wimble company को पूछा कि act our external auditor part of it. Okay. So अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, and again your firm also audits Barker company. यहाँ पे देखो मुरे company manufactures sports equipment and your firm also audit Barker company and other manufactures sports equipment. दोनों, that is Murray company and Barker company, they are rivals then in that case, and therefore your firm is confident it has experience to carry out because you have been doing Murray company audit, क्योंकि आपने accept किया है. So जब एक का accept किया है और दूसरा भी similar company है, तो you are confident or not? Okay, so now you own a small number of shares in Murray company as you used to be an employee. Okay, आप एक ऑडिट मैनेजर हो एंड आप विम्बल एंड कंपनी में ज्वाइन होने से पहले you were employee of Murray company and during that particular time you were also holding the shares of the Murray company as you used to be an employee of the company. Okay, अभी डॉन हैनमैन जो कि बार्गर कंपनी का एंगेजमेंट पार्टनर है जो है for 12 years will take the role of engagement partner for Murray company. Okay, the audit senior will be Tim Andrews. Audit senior कौन रहेगा? Tim Andrews रहेगा. Okay, now as his sister is the financial controller at Murray company and therefore he knows the business well. He knows the business well. Now your firm recently purchased some bips, football and other equipments from Murray company. आपका firm जो है, that is audit firm जो है, उन्होंने recently some bips, football और other equipments Murray company से खरीदा है for firms का annual football tournament. अब Murray company has offered to provide this equipment free of charge, means बिना किसी पैसे के, बिना किसी पैसे के. Okay, now Murray company has offered to provide this equipment free of charge if they accept the role of an auditor. उन्होंने. And Murray company would also like your firm to provide taxation or accounting services. Specifically, the company would like to prepare the financial statements and representing the company in a dispute with the taxation authority. That means यहाँ पे देखो what they want. See, because of lot of conflict of interest, they want you to represent them in a dispute also. Like एक legal case चल रहा है tax में, उसमें भी help करो और उनके financial statements भी prepare करने के लिए बोल रहे हैं. Okay, the fee for last year audit of Barker company has not yet been paid. तो यहाँ पे Barker company का अभी तक पे नहीं किया. Okay, आपने जो audit last year Barker company में जो किया है उसका अभी तक payment आया ही नहीं. And you have been asked by Don Hanman to look into the matter. और आपको Don Hanman जो है, जो कि who is an engagement partner, to look into the matter. Don Hanman ने आपको बोला है कि इसमें ये कर. अब यहाँ पे जो है, now you have to do two things. ये समझ में आया? उर्वी, ओमेर, गणेश, did you understand the question? क्वेश्चन समझ में आया? गणेश, ओमेर, उर्वी? हाँ सर. So वो last sentence नहीं समझा. कौन सा? Look into the matter for what, like what? Look क्योंकि into the matter means question. Barker Question में and जो है ना, look into the matter okay. means ये वाला question.
Okay, okay, fine. ओके, क्योंकि वी शुड नो ना कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग. तो अब यहाँ पे जो है लुक इनटू द मैटर मींस ये वाला, दिस पार्ट. ओके, दैट मींस टू टेक केयर ऑफ टैक्सेशन अथॉरिटीज का इश्यू डिस्प्यूट तुम ले लो और प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आल्सो. ओके, सो अब नाउ द Okay. क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्टेप्स विम्बलडन कंपनी शुड टेक. क्योंकि वी कैन सी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो तो दिख ही रहा है कॉन्फिडेंट, क्योंकि सिस्टर वहाँ फाइनेंशियल कंट्रोल है मोरे कंपनी में, एंड ये बार्गर कंपनी का ऑलरेडी तुम एंगेजमेंट पार्टनर हो. ओके, जिसका पुराना ड्यू बचा है. अब यहाँ पे जो है विम्बलडन कंपनी को ऐसे कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू अवॉइड दिस थ्रेट्स, क्योंकि अपने को फेस में ही दिख रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो खुद ही देखो क्वेश्चन में ही बोला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज देयर, हाउ यू आर गोइंग टू डील विद इट. द फर्स्ट थिंग जो अपने पहले देखा कि भैया disclose that they have a conflict of interest, both the clients. Okay, and get their consent to act. Okay, that's the first step that you can take it. क्योंकि conflict of interest है, because we know that, because दोनों में कॉमन क्या है, विम्बलडन कंपनी ऑडिट फर्म है कि नहीं. दोनों में कॉमन क्या है, विम्बलडन कंपनी जो कि ऑडिट कर रही है किसको, मोरे कंपनी को भी और बार्गर कंपनी को भी. ओके, और मोरे कंपनी ने आपसे पूछा है एक्सेप्ट करो अपॉइंटमेंट का, जबकि उसको मालूम है कि तुम बार्गर कंपनी से कर रहे हो. सो यू हैव टू कन्वे टू मोरे कंपनी कि भैया मैं तुम्हारा ऑडिट ले सकती हूँ, लेकिन आई एम ऑलरेडी हैव एन इंटरेस्ट इन योर कंपनी एंड हेंस आई नीड परमिशन टू दैट. एंड ऑल्सो जैसे अपने देखा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे सेल्फ रिव्यू ये सब रहता है, इंटिमिडेशन के टू अवॉइड इट यू हैव टू क्रिएट सेपरेट टीम्स. तो विम्बलडन कंपनी व्हाट दे हैव टू डू टू अवॉइड द थ्रेट, दे हैव टू क्रिएट सेपरेट टीम्स. ओके, दोनों के लिए, लाइक बार्कर के लिए अलग टीम एंड मोरे कंपनी के लिए अलग टीम पड़ा फिर, एंड यू हैव टू लेट डाउन द प्रोसीजर्स. एंड अभी अपने देखा कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट, अपने यहाँ पे देखा ना कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट जो है, you have seen this confidential agreement. So you have to maintain the confidentiality. Yes, you can see you need to have an agreement of confidentiality so that you can safeguard the interest of the clients with the agreement part of it. Okay, ताकि आपका टीम जो है जिसका असाइन कर रहे हैं they will not disclose the information of the client with each other. So this agreement, this at least these three things you should do as a Wimbledon company should take these measures before they are performing audit of the Murray company and Barger company. क्योंकि बार्गर कंपनी में ऑलरेडी दे वर डूइंग ऑडिट, एक साल हो गया और उनका पेंडिंग भी है ड्यू, वन पॉइंट. बट मुरे कंपनी ने क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया एक्सेप्ट करने के लिए, बिफोर एक्सेप्टिंग यू हैव टू डिस्क्लोज देम दीस 2-3 पॉइंट्स. गॉट इट उर्वी? Okay. एंड अभी वो बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर केस मुरेन कंपनी में जो 6 थ्रेड्स हैं, कौन से थ्रेड्स, ये अपना इंटरेस्ट का, सेल्फ इंटरेस्ट का, देन यहाँ पे देखा ना अपने प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे काम किया था ना उसने, किसने, दिस मुरे में द ऑडिट मैनेजर इज हैज वर्कड इन मुरे, Employment था पहले. एम्प्लॉयमेंट का थ्रेट है. हम्म. ओके, देन वो ये भी दे रहा है इक्विपमेंट फ्री गिफ्ट्स वाला, Overdues. ओवरड्यूज भी है, बिकॉज ऑफ लॉन्ग एज पर्सनल रिलेशनशिप भी है, क्योंकि उसकी सिस्टर, यू कैन सी द सिस्टर पार्ट ऑफ इट. सो यू हैव ए सिस्टर, दैट इज पर्सनल रिलेशनशिप, ये गिफ्ट्स आ गए. ओके, देन यू आर ऑलरेडी वर्किंग विद द मुरे कंपनी फॉर अ लॉन्गर टाइम, दिस थिंग, सो रॉन्ग रिलेशनशिप आ गया, पर्सनल रिलेशन रॉन्ग, एंड ऑल्सो दे वांट यू टू रिप्रेजेंट इन द डिस्प्यूट, दैट मींस रिप्रेजेंटिंग द क्लाइंट भी आ गया, एंड ओवरड्यू भी आ गया, लाइक यू सेड ओवरड्यूज आ गए. So these are 1, 2, 3, 4, 5 तो यहीं पे हो गए. You got a point? Yes. So these 5 threads you have to, एक तरफ threads लिख दो, दूसरी तरफ से उसके safeguards लिख दो. You got a point? That's what they want us to do in question number B. Because you will be having theoretical questions, so it is very very important that you understand, highlight them. So the theory में जो points जो रहेंगे,
Okay, that is based on your presentation part of it, how well you are able to present that. Okay, left side में you write these threats. Okay, right side में you put it. जैसे अभी वो गिफ्ट दे रहा है, अब हेडिंग आप डाल देना, गिफ्ट डाल दो, और गिफ्ट में क्या आ जाएगा, यू कैन से देयर इज अ क्लाइंट में क्रिएट अ क्लाइंट, बिकॉज एक बार आपको गिफ्ट दे दिया तो आप क्लाइंट इज क्रिएटिंग बाय गिविंग गिफ्ट ए सेल्फ इंटरेस्ट इन यू, है कि नहीं? Hmm. By giving gift the client is creating self interest or not? Okay, so that's where you have to keep in mind. And the same way you have जैसे लॉन्ग एसोसिएशन लाइक प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, द ऑडिट मैनेजर जो है वो पहले काम कर चुका है, so that means what is happening, it is creating a self review threat. अभी अपने डिस्कस किया ना, एक कंपनी का दूसरे में गया है और वही आया है ऑडिट के लिए, तो सेल्फ रिव्यू आया कि नहीं? ओके, सो दैट्स वेयर सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ गया। और जो सेल्फ रिव्यू थ्रेट में जो अपन ने देखा, व्हाट वी से safeguard measures, those actions we need to take as per the self review for self review threat. And financial interest, what is the, यहाँ पे self interest में क्या क्या आएगा? self interest में again यहाँ पे देखो self interest में क्या आया, ऑडिट मैनेजर यू आर ओनिंग स्मॉल नंबर ऑफ शेयर्स, है कि नहीं? अगर आपके शेयर्स मुरे कंपनी में है, डू यू थिंक यू आर गोइंग टू गिव अ नेगेटिव ओपिनियन पार्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, ये वाला लिमिटेड ओपिनियन? नहीं ना, अदरवाइज उनके शेयर्स गिर जाएंगे। अब अपने पेड़ पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारोगे, राइट? So when you have this self interest because of the financial investment that you have done in the company Mure, so hence you have to ensure that, इसको सेफगार्ड कैसे करेंगे मुझे बताओ। यहाँ पे सेल्फ, आई कुड सी ए सेल्फ इंटरेस्ट, यहाँ पे ऑडिट मैनेजर का के पास मुरे कंपनी के शेयर्स हैं, तो अगर ऑडिट मैनेजर जो है उसको मुरे कंपनी के पास शेयर्स हैं, तो हाउ यू कैन रिड्यूस योर सेल्फ इंटरेस्ट, मुझे बताओ, बोलो क्या कर सकते हो मुझे? दूसरे टीम को पॉइंट कर सकते हैं, यस, या तो ऑडिट मैनेजर चेंज कर दो, या नंबर फिर ऑडिट, उनके शेयर्स बेच दो और देन यू कैन ऑडिट। यस वी कैन से दैट, या तो शेयर्स बेच के आप करो, या फिर यू हैव डिस्क्लोज, एटलीस्ट डिस्क्लोज तो कर सकते हो, या फिर और मोरे कंपनी का जो ऑडिट मैनेजर उसको चेंज कर दो, बिकॉज विम्बलडन कंपनी इज द मेन ऑडिट फर्म ना, तो दैट मींस द ऑडिट मैनेजर हैज टू डिस्क्लोज विम्बलडन कंपनी दैट आई एम होल्डिंग द शेयर्स ऑफ द मुरेन कंपनी, तो मुझे मत भेजो, आप किसी और को भेजो, है कि नहीं? यस। ऑडिट मैनेजर जो विम्बलडन कंपनी का जो है, जो मुरे कंपनी में जा रहा है, जिसके पास उसके वो कंपनी के शेयर्स हैं, he has to disclose to विम्बलडन कंपनी saying I am an audit manager of that you have assigned for me Muren company, but I am already holding the shares. तो आप डिस्क्लोज कर सकते हो that there is a conflict of interest, ताकि विम्बलडन कंपनी can assign another person, like ये जो ऑडिटर मैनेजर जो है, this audit manager can go to Barker company and बार्कर का ऑडिट मैनेजर कैन गो टू मोरे कंपनी, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहेगा। गॉट इट? सो ऑडिट मैनेजर चेंज कर दो या फिर डिस्क्लोज कर दो। ओके, समझ में आया क्या क्या लिखना है? एंड अप्रोप्रिएट थ्रेट्स यू हैव टू आइडेंटिफाई, एंड देन अगेंस्ट दैट यू हैव टू राइट द सेफगार्ड्स। ओके, सो दैट्स व्हाट पार्ट बी इज। लेट्स सी पार्ट बी में उन्होंने क्या क्या लिखा है। So can we write same solution for 2 points? कौन सा? तो 2 पॉइंट के लिए कोई सेम सॉल्यूशन लिख सकते हैं? That depends, you can definitely, क्योंकि सेम सोल्यूशन यही रहेगा ना, चेंज द पर्सन हाँ, या या तो प्रोजेक्ट, बिकॉज डेफिनेटली देयर विल बी सेफगार्ड्स जो रहेंगे रिपीट होंगे, भाई बिकॉज या तो यू कैन डिक्लाइन, जैसे अभी आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखा, यहाँ पे डिक्लाइन और रिजाइन बोला है, राइट? अगर आप डिस्क्लोजर में भी डालोगे पब्लिक इंटरेस्ट में या कॉन्फिडेंशियलिटी में, वो भी डिक्लाइन एंड रिजेक्ट करेंगे। सो इफ यू सी इंटिमिडेशन थ्रेट्स, वहां पे भी देखो डिक्लाइन और रिजाइन। सो द थ्रेट का जो सेफगार्ड मेजर्स आर द सेम थिंग, या तो आप लो तो सेपरेट टीम्स रखो, नहीं तो डिक्लाइन कर दो।
You can always have the similar threats. Got it? देखो अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा, लेट्स सी आंसर क्या दिया है. See here. A वाला तो देखो, Wimbledon company must inform both clients so that there is a conflict, okay, and obtain their consent, written consent. Then separate teams दोनों के लिए होने चाहिए, एक दूसरे से लिंक नहीं होना चाहिए, and confidential agreement साइन करना चाहिए. Got it? जो अपन ने स्टार्टिंग वाला ए वाला पार्ट देखा. एंड थ्रेड्स वाला देखो, बी वाला पार्ट जो है, 6 थ्रेड्स जो है, 6 या 5, लेट्स सी. क्वेश्चन में 6 बोला है तो वो लोग 6 ही लेंगे. ओके, एक तो ये है कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट. सी, ओनिंग शेयर्स, क्रिएटिंग सेल्फ इंटरेस्ट. कैसे करेंगे मैनेजिंग थ्रेड? दे आर टू डिस्पोज, जैसे उर्वी ने बताया, बेच दो शेयर्स को, बेच दो, या फिर दूसरा ऑडिट मैनेजर को अपॉइंट करो. सिंपल. या तो शेयर्स बेच के तुम ऑडिट करो, या फिर तुम्हारे प्लेस में किसी और को भेजो, ताकि एंगेजमेंट टीम में कोई बायसनेस ना रहे. गॉट इट? अभी दूसरा थ्रेड देखो, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट. जैसे ऑडिट मैनेजर मुरे कंपनी में काम कर चुका है, तो पॉसिबिलिटी सेल्फ रिव्यू क्या है, तो क्या कर सकते हैं, या तो ऑडिट मैनेजर शुड नॉट बी असाइंड टू मुरे कंपनी, चेंज कर दो. ओके, इफ दे वुड ऑडिट देयर अकाउंट्स रिकॉर्ड दे प्रिपेयर्ड व्हाइल्स एम्प्लॉयड एट द क्लाइंट, इसलिए. देन गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी, इट्स क्रिएटिंग सेल्फ इंटरेस्ट. तो क्या करना है, द फर्म को इवैल्यूएट करना है गिफ्ट्स ऑफर्ड अनलेस ट्रिवियल and inconsequential. The audit team must not accept equipments. Agar that equipments are going to influence the decision or the audit process of the Wimbledon company, then they are not supposed to accept those gifts. Got it? Same long association. जैसे अभी मैं अपन engagement partner for Barker company has been in place for 12 years. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ना 12 years का. So उसमें क्या हुआ, फेमिलियरिटी भी आई और सेल्फ इंटरेस्ट, दोनों थ्रेड्स आ गए. तो हाउ वी कैन डू दैट? सेफगार्ड कैसे कर सकते हैं? रोटेट करो, इंडिपेंडेंट रिव्यू करो, इंडिपेंडेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ऑफ द एंगेजमेंट. सेम पर्सनल रिलेशन, जैसे सिस्टर जो अभी अपन ने डिस्कस किया, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, टीम एंड्रू शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द ऑडिट टीम. सिंपल. क्योंकि उनकी सिस्टर मुरे कंपनी में फाइनेंशियल कंट्रोलर है. टीम एंड्रू, he might be whatever the position part of it, वो टीम ऑडिट टीम का हिस्सा नहीं बन सकता बिकॉज ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप. बिकॉज अगर वो उसका टीम का बनेगा, सो व्हाट काइंड ऑफ रिस्क यू आर गोइंग टू क्रिएट? देखो, फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट. These are 3 threats which we are creating by putting Team Andrew in the audit team. Tanmay, Urvi? Yes. So this is how you need to mention that. Representing the client again. So Murray company would like audit term. So यहाँ पे क्या है? Representing the client means you are creating an advocacy threat and self-review threat because of the person audit manager being an employee of the organization in the past. So that means you are creating a kind of an advocacy threat. So how I can do that? Firm must not represent the audit client in such disputes. Clearly, simple. You can politely decline the request. Overdue ka bhi same. What is going to create? It is going to create self-interest threat as well as intimidation threat. दोनों. Okay. उन्होंने intimidation threat नहीं दिया, but you can create both the threats with the overdue fees. So do not perform any more audits. Simple. आप बोल सकते हो जब तक तुम पुराना फीस पे नहीं कर दें तब तक हम आगे ऑडिट वर्क नहीं कर सकते. ओके. देन अदर सर्विस प्रोविजंस, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये सब दे दिया. द फर्म मस्ट ओनली परफॉर्म वर्क ऑफ रूटीन नेचर, मैकेनिकल नेचर, यूज स्टाफ, if perform a member of audit team, arrange an independent partner. So these are all the methods that you can take to safeguard the threats. Got it? So when you are accepting an audit engagement, okay, the audit firm should take the client and also ensure that what kind of appropriate level of risk that they are going to take it. Okay, before the firm, that audit firm जो है, consider कि यार मैं इसका audit का task में take up करूं या नहीं, तो they have to ensure that they have taken care of these matters. These
nine what we say these 11 factors have been taken into consideration before you are engaging yourself or the company before taking up an audit. One, professional clearance. Professional clearance means आप take up करने से पहले you are trying to take an approval कि भैया कुछ issue तो नहीं है. Got a point? You are taking a clearance from, let's say for an example, Omer and Urvi are certified ACC. Okay. अब Ganesh wants the Omer क्या बोलते, Ganesh wants Omer to Omer's firm to do the audit. और उससे पहले उर्वी का कंपनी ऑडिट कर रहा था गणेश फर्म को, गणेश की कंपनी को. अब ओमेर एक्सेप्ट करने से पहले क्या करेगा? ही इज गोइंग टू कॉल उर्वी saying that hi Urvi, this is Omer here and I got the contract of Ganesh company का audit करने के लिए. Okay, and you have been doing previous audit. Is everything fine with them? You are going to check professional clearance because so that in case अगर any issues हैं, some frauds हैं and all, so either you are going to get it clear before you take the engagement or you are going to decide whether to accept the engagement or not. समझ में आया? Okay. Why do we go with the outgoing auditor? Why? Because यहाँ पे outgoing auditor कौन है? Outgoing auditor is Urvi. Incoming auditor कौन है? Omer. So don't you think जब वो आ रहा है तो he should ensure that everything is clear? So what is happening is यहाँ पे देखो, you are checking with your client permission to contact the existing auditor. Client से आप पूछ रहे हो कि that is आप गणेश से पूछ रहे हो कि देखो गणेश, मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट लेने से पहले आई वुड लाइक टू हैव अ वर्ड विथ योर प्रीवियस और एग्जिस्टिंग ऑडिटर. ओके. अगर क्लाइंट रिफ्यूज करता है, गणेश बोलता है नहीं यू शुड नॉट एक्सेप्ट इट, यू शुड नॉट चेक इट, देन आप क्लियरली रिफ्यूज कर सकते हो, मुझे भी नहीं लेना, आई एम नॉट गोइंग टू डू द audit part. So you are asking an information relevant to your decision whether to take up the engagement or not. Okay, so that means you are sending them a reply message response to the existing auditor and you're waiting for the response. Okay, अगर response नहीं आता तो you may still continue and take adequate steps and measures so that your interest is not affected. तो जब अब मेरा ओमेर का ओपिनियन आएगा तो बोलेंगे कि मेरे से पहले क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है, बट एज पर दिस कीपिंग द पास्ट इनटू माइंड विद द प्रेजेंट अकाउंट्स एवरीथिंग इज फेयर. सो यू कैन ऑलवेज गिव द डिस्क्लेमर पार्ट ऑफ इट. ओके. सो इसीलिए द क्लाइंट गिव्स द परमिशन टू द न्यू ऑडिटर टू चेक विथ योर द प्रीवियस ऑडिटर, एग्जिस्टिंग ऑडिटर. ओके. सेम वे जिस तरह से नया क्लाइंट, नया ऑडिटर क्लाइंट से पूछ रहा परमिशन टू seek information from the existing auditor, the same way existing auditor should also seek permission from the client to disclose certain information to the new auditor. Okay, so that's where the professional clearance comes into place. समझ में आया और भी? Understood? No. Same way independence and objectivity. That means what जो अभी आपने देखा, that is threats में अपन ने already discuss किया, independence and objectivity part of it. So before accepting the engagement part of it, you have to ensure there will be objectivity threat है और independence related जो भी threats रहेंगे which cannot be accepted. So that has to be brought to them. अगर acceptable नहीं है तो you are not going to go ahead with the engagement part of it. You are not going ahead with the engagement. अगर threat cannot be eliminated. Okay. Management integrity. अगर client lacks integrity or there is a possibility that they, because of lacking integrity, you are involving into greater risk, you can comfortably say no to them. You can comfortably say no to the company product. So if the firm has a reason to believe that client lacks integrity and there is a greater risk of fraud and intimidation, you can comfortably reject the engagement part of it. Money laundering. Okay, so client का due diligence जो रहेगा, a firm must comply with money laundering regulations. अगर वो नहीं करता तो you can clearly reject the engagement part. Okay, so that's where it is. And then resources again. The firm should consider whether
दैट मीन्स फॉर्म करने से पहले आपको ये पूछना पड़ेगा कि भैया जो मैं मांगू तुम दोगे क्या, आई नीड these things, आर यू रेडी टू गिव दोज इन्फॉर्मेशन सो आई कैन डू दैट, या फिर टाइमलाइन उसने बोला कि मुझे फटाक से चाहिए, कल मेरा ऑडिट है. Okay, so all those things you have to keep in mind and ensure that the quality of work is not affected. So if the resources that are there at the client and they're affecting the quality of your work, then again you can comfortably reject the audit engagement part. And then risk अगर क्या है, अगर the client जो तुमको hire करना चाहता है, okay, they have adequate risk, means already they are doing bad in the corporate, that means वो market में they are having poor performance, poor control रहेगा, unusual transaction, पैसा कहाँ से आता है, और वैसा है, so that you have to take into consideration. Why? Because that might increase your risk. So if it is increasing the risk, you cannot give an appropriate report because it will be inappropriate. So in that case, it is always avoid the audit engagement. Then fees, अपने ऑडिट देगा, इट इज अगर वो सिग्निफिकेंट लेवल है तो इट इज अप टू द ऑडिट टीम, ऑडिट फर्म टू चेक द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट. अरे यार जो तुम मेरा फीस नहीं दे सकता उसका फर्म वो दूसरे का क्या देगा, उसके बुक्स रिकॉर्ड्स कैसे रहेंगे. द फीस शुड बी कॉम्पेंसेटेड विद द लेवल ऑफ रिस्क. दैट मींस जो भी आप फीस चार्ज कर रहे हो इट हैज टू बी कॉम्पेंसेटेड विद द लेवल ऑफ रिस्क. सेम प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो अपन ऑलरेडी देखा, एन एंगेजमेंट शुड ओनली बी एक्सेप्टेड इफ द ऑडिट फर्म हैज एडिक्वेट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस. मींस अगर आपके पास वो स्किल और एक्सपीरियंस है तभी आप एक्सेप्ट करते हैं. Representation of the client is also important before you accept the audit engagement. Preconditions for an audit. So ISA 210 जो है agreement the terms of audit engagement and the code of ethics जो अभी अपन ने पहले डिस्कस किया था. So they have certain preconditions, means audit accept करने से पहले, that is before the client gives you an engagement letter or before you say yes to them. So there are certain conditions or certain checks, we can say that. We cannot say checks, preconditions acha, we can say checks that an audit firm has to do before you acknowledge and accept the arrangement part. So pehla, preparation of the financial accounts and understand the responsibility for what we say applicable framework hai ki nahi, internal control necessary for the financial statements hai ya nahi, providing auditor with access all information are easy ready to give it or not. अगर इन तीनों में अगर क्लाइंट कुछ लिमिटेशंस रखता है, कुछ कंडीशंस रखता है या फिर कुछ डिस्क्लेमर रखता है, तो देन यू कैन क्लियरली से नो टू द एंगेजमेंट पार्ट. समझ में आया गणेश? अगर क्लाइंट इन तीनों में देने में अगर कुछ नाटक या फिर आनाकानी कर रहा है तो देन यू कैन कंफर्टेबली रिजेक्ट द एंगेजमेंट पार्ट. ओके, and then continuance. Continuance means once the engagement is complete, means everything is there, the audit firm must revisit the acceptance consideration again to ensure कि जो भी वो continue करना चाहते हैं for this following year, पूरे साल में, is there any inappropriate things or is there any significant issues that have arisen during the year such as any disagreements या फिर कोई doubts, कोई integrity में issues. तो ये सब अगर उनको during the course उनको लगता है okay कि it is going to affect their continuance, they can comfortably resign from their or auditor's position पर, external auditor का position से they can resign. Okay, that's where it is. So अब engagement letter जो है अपन next class में करेंगे, ठीक है? यहाँ से engagement letter से next class में ये वाला topic खत्म हो जाएगा. क्या मंडे या कल? मंडे कल नहीं ना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ना, मंडे रहेगा. ओके सर, एक बार अखिलेश सर को बोलो ना कि मेरा बोलता टैग हूँ, का मैं डाउट. देखता हूँ मैं, ठीक है, नो इश्यूज.